Now we'll do microsporogenesis. What is microsporogenesis? Microsporogenesis is the formation of microspores from microspore mother cell or pollen mother cell in the microsporangia or in the pollen sac by meiosis cell division. So each microspore mother cell produces 4 microspores and 4 microspores they are all haploid. ठीक है, यहाँ पे हम पहले पढ़ चुके हैं एंथरलोप, the outer structure epidermis, then endothecium, then the layer 3 to 4 layers, that is middle layer, and then this is the tapetum part, and this part inside it is microspore mother cell. हम पढ़ चुके हैं that archisporial cells it divides into 2, primary parietal cell और primary sporogenous cells. Primary sporogenous cells क्या बनाएगा? माइक्रोस्पोर मदर सेल और पोलन मदर सेल्स. ठीक है, कौन बनाएगा? प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स. सो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स they are diploid and it produces by mitosis. What it produces? Pollen mother cells, वो भी diploid है. Primary sporogenous cells by mitosis cell division it produces pollen mother cells or you can say microspore mother cell. Now this pollen mother cells undergoes meiosis cell division और क्या बनाएगा? microspores. So प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स ने क्या बनाया? पोलन मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल. ये माइक्रोस्पोर मदर सेल कैसे माइक्रोस्पोर बनाएगा? टुडे विल डू दैट इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. सो आई एम टेकिंग ओनली this one cell if I take, this is a microspore mother cell, this is nucleus. Now each cell, this मतलब मैंने इतना टुकड़ा लिया है, this part only, each mother cell will produce 4 microspores which are haploid. ठीक है, कैसे बनाएगा? Now this microspore mother cell it is a layer, there will be a deposition of a polysaccharide layer that is known as callose wall. ये जो है ये पूरा एक polysaccharide layer है. This is known as callose wall. Clear? This is a microspore mother cell or pollen mother cell. It undergoes meiosis 1. We know mitosis के अंदर 2 daughter cells होते हैं और meiosis के अंदर 4 daughter cells formation होता है. तो ये meiosis 1 हुआ. ठीक है, पहले न्यूक्लियर डिवीजन होगा और उसके बाद साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा. ठीक है, तो पहले न्यूक्लियर डिवीजन जब होगा तो कितने बन जाएंगे? 2 microspores and then it is surrounded by callose wall. Now there is a function of callose wall which is very very important. The callose wall you can see here, this is a layer of polysaccharide. So callose wall protects the developing microspores from pathogens, change in temperature or infection. So this callose wall it protects the developing microspores from infection or from any damage or change in temperature. So there will be formation of 2 microspores and then last में कितने होंगे? meiosis 2. meiosis 2 होगा तो there will be formation of 4 microspores. 1, 2, 3, 4. ठीक है, so there will be formation of 4 microspores. meiosis cell division means these are haploid cells. ये क्या हो जाएंगे? haploid cells. So callose wall जैसे मैंने बोला, callose wall first what it does, it forms
microspore mother cell, it is surrounded by a polysaccharide layer called callus. Okay? And then the nuclear division takes place. Nuclear division means first it forms 2, then it forms 4 microspores. Now the cytoplasmic division will take place. क्या हो जाएगा? Slowly this callus wall it spreads, it increases, it gradually it increases. यहाँ पे increase होगा और इस साइटोप्लाज्म को 4 में डिवाइड कर देगा. मतलब 4 माइक्रोस्पोर्स में डिवाइड करेगा. ये 4 माइक्रोस्पोर्स हैं. बट these microspores they are attached to each other. ये माइक्रोस्पोर्स क्या करेगा? They are attached to each other. है ना? So they are attached to each other, and these all microspores are haploid. यहाँ पे आप देखिए meiosis 2 सेल डिवीजन हुआ. उसके बाद callus जो है वो gradually increases and it separates the 4 microspores. But all these 4 microspores they are attached to each other. सेपरेट किससे करेगा? किसका डिवीजन होगा? साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा. दैट इज साइटोप्लाज्मिक डिवीजन. और उसके बाद ये क्या बनाएगा? एक टेट्राड. क्या बनाएगा? टेट्राड. सो they are arranged in tetrad. The arrangement of in the tetrad, these are arranged in a tetrad. This arrangement of tetrad can be in a various way. पहला अगर इस तरीके से अरेंजमेंट होगा that is known as tetrahedral. एक और अरेंजमेंट है that is like this. This is known as isobilateral. This is isobilateral. इस तरह के अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? टेट्राहेड्रल. इस तरह के अरेंजमेंट को कहेंगे टेट्रा. यहां पे एक पीछे की तरफ है, वन एट द बैक. सो इस तरह के अरेंजमेंट को हम कहेंगे टेट्राहेड्रल. टेट्राहेड्रल. नेक्स्ट डी शेप्ड. इसको कहते हैं डेकासेट. इज नोन एज डेकासेट. इसके अंदर अरेंजमेंट कैसा रहेगा? दिस इज डेकासेट. नाउ नेक्स्ट last one more is there, that is linear. 2, 3. So this is linear shape. Linear shape means this way. This is known as linear. Last is T-shaped. T-shaped. This is T-shaped. So you can see the tetrad, the arrangement in the tetrad can vary. Okay. So once again I am repeating that primary parietal layer and archisporial cells divide into two, that is primary parietal layer and primary sporogenous, primary parietal cell and primary sporogenous cells. This primary sporogenous cells undergoes mitosis cell division and it forms microspore mother cells or pollen mother cells which are diploid. क्योंकि mitosis cell division हुआ, ये diploid है. Now each mother cell undergoes meiosis cell division. This each mother cell means only if you see this part. They are multinucleate. You can see microspore mother cell. Now each mother cell
This each mother cell, I have taken only one mother cell, one microspore mother cell. It then undergoes first nuclear division and then cytoplasmic division. Each mother cell it surrounds by a polysaccharide layer that is known as callus. This callus it protects from infection. किसको प्रोटेक्ट करेगा? डेवलपिंग माइक्रोस्पोर को फ्रॉम इन्फेक्शन और चेंज इन टेम्परेचर और यू कैन से पैथोजेंस. It undergoes first meiosis division that it forms 2 microspores and then second meiosis division forms 4 microspores and slowly, gradually the callus it increases its size and it divides the cytoplasm into 4. ठीक है, साइटोप्लाज्म को साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है ड्यूरिंग मियोसिस. ठीक है, मियोसिस के टाइम पे साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा और साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होने से ये क्या बनाएगा? 4 माइक्रोस्पोर बनाएंगे. बट ऑल दिस 4 माइक्रोस्पोर्स दे आर अटैच्ड टू ईच अदर एंड दे फॉर्म टेट्राड. दिस अटैच्ड टू ईच अदर दे आर नोन एज टेट्राड. दिस टेट्राड बनाएगा. टेट्राड मीन्स यहाँ पे 3 दिख रहा है, एक आपका पीछे साइड में है. So each mother cell divides meiotically and form 4 haploid microspores, but they are arranged in tetrad. So the arrangement of tetrad can vary. इस तरह का अरेंजमेंट होगा तो इसको कहेंगे आइसोबाइलेटरल. इस तरीके का अरेंजमेंट होगा तो कहेंगे टेट्राहेड्रल. This one is D-shaped. That is why it is known as decussate. Decussate means you can write D-shaped. This one is linear and this is T-shaped. तो ये तो हो गया किस तरीके से 4 माइक्रोस्पोर्स फॉर्मेशन हुए और ये 4 माइक्रोस्पोर जो 1 से 4 बना ये फिर रिलीज होके क्या बनाएगा? 4 माइक्रोस्पोर्स. One, 2, 3, 4. 4 microspores and they are all haploid. It forms what? 4 microspores and they are all haploid. These are 4 microspores are produced. They release. That we will do. How these 4 microspores are released? Slowly what happens? This callus wall, it degenerates. It dissolves by the enzyme which is known as callase. By the enzyme which is known as callase. With the help of callase enzyme, with the help of callase enzyme which is released by the tapetum. ये जो आपका tapetum layer दिख रहा है, इस tapetum से क्या रिलीज होता है? कैलेज एंजाइम. और ये कैलेज एंजाइम कैलेज वॉल को डिसॉल्व कर देता है. और जब कैलेज वॉल को डिसॉल्व कर देगा तो ये चारों माइक्रोस्पोर्स जो हैं वो रिलीज हो जाएंगे. ये चारों माइक्रोस्पोर्स रिलीज हो जाएंगे. लेकिन रिलीज होने के बाद ऐसा नहीं है कि ये पोलन सैक से बाहर आ जाएगा. नहीं, ये इसी के अंदर रहेगा. ये इसी के अंदर रहेगा. ये चारों चारों माइक्रोस्पोर्स किसके अंदर रहेगा? पोलन सैक के अंदर ही रहेगा. अभी रिलीज नहीं होगा. रिलीज कब होगा? जब ये एंथर का जो स्टोमियम है ये डिसॉल्व हो जाएगा. अभी स्टोमियम डिसॉल्व नहीं हुआ. क्या डिसॉल्व हुआ? ये जो चारों माइक्रोस्पोर्स एक साथ अटैच थे, इनकी जो वॉल है दैट इज कैलोस वॉल, it dissolves. The callus wall dissolves due to the callase enzyme which is released by the tapetum here. ठीक है, अब चारों माइक्रोस्पोर्स क्या हो गए? रिलीज हो गए. अब चारों माइक्रोस्पोर रिलीज हो गए मतलब पोलन ग्रेन्स बनाए. पोलन ग्रेन्स क्या होता है? पोलन ग्रेन्स लाइट वेट होते हैं. ठीक है, जब माइक्रोस्पोर्स ड्राई हो जाएंगे तो वो पोलन ग्रेन्स बनाएगा. माइक्रोस्पोर्स ड्राई हो जाते हैं और लाइट वेट हो जाते हैं और ये क्या कहलाता है? पोलन ग्रेन्स. ताकि लाइट वेट इसलिए ताकि आराम से पॉलिनेशन हो सके, उड़ सके, है ना. विंड पॉलिनेशन भी होता है तो पोलन ग्रेन्स ताकि आराम से उड़ सके. सो दीज माइक्रोस्पोर्स इट फॉर्म्स 4 पोलन ग्रेन्स. 4 पोलन ग्रेन्स मीन्स लाइट वेट हो जाएगा और पोलन ग्रेन्स लाइट वेट हो जाएगा और ड्राई हो जाएगा तो पोलन ग्रेन्स फॉर्मेशन होता है. क्लियर? तो हमने पढ़ा
till here it is nuclear division and then from here the cytoplasmic division, और उसके बाद कैलेज एंजाइम के थ्रू the wall, the callose, it dissolves and चारों के चारों pollen grains, microspores बाहर आ जाते हैं. Microspore you can say it is pollen grains, only the difference is pollen grains ड्राई होते हैं जो कि माइक्रोस्पोर नहीं होते. जब माइक्रोस्पोर ड्राई हो जाता है तो उसको पोलन ग्रेन्स कहते हैं. ठीक है, ड्राई और लाइट वेट हो जाता है तो उसको पोलन ग्रेन्स कहते हैं. और पोलन ग्रेन्स एज आई सेड इट विल बी हियर ओनली इनसाइड द पोलन सैक. अभी पोलन सैक से रिलीज नहीं होंगे. क्या नहीं रिलीज होंगे? माइक्रोस्पोर्स. अभी पोलन ग्रेन्स और माइक्रोस्पोर्स यहां से रिलीज नहीं होंगे. ये रिलीज कब होंगे? जब डेहिसन ऑफ एंथर होगा, जब यहां से डिसॉल्व होगा फिर जाके ये रिलीज होंगे. तो अभी तक हमने पढ़ा किस तरीके से 4 माइक्रोस्पोर्स बनते हैं. ओके, नाउ विल डू द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन. As I said, microsporogenesis, that is formation of microspores from microspore mother cell or pollen mother cells. ठीक है, एंड इट फॉर्म्स हैप्लॉइड सेल्स. तो हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा. नाउ नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन्स. क्लियर? सो दिस इज ओनली माइक्रोस्पोरोजेनेसिस.